Very good good morning, friends. Welcome to the channel Stock Guru. And yes, स्टॉक मार्केट में जो लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये कम्युनिटी चैनल है. सो दिस इज अ चैनल वेयर यू कैन ऑलवेज कम डिस्कस आस्क थिंग्स रिलेटेड टू इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस. माय नेम इज़ नवीन कुमार शर्मा एंड आई एम द होल सोल ऑफ दिस चैनल. तो जब भी आप आएँ, सबसे पहले आपने हमेशा की तरह क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल और बेल आइकन दबा के ही देखना है. सो दैट्स द मिनिमम आई एम आस्किंग. People who want to be interested rather to uh, through a consistent earning with good funds. तो वो I will give them little guidance through my WhatsApp number on my training mentorship. You may call it anything. So you can join through that. Otherwise, please stay with this channel and try to see what is the learning and how it is helping you in your trade journey. Okay, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं what is happening. बैंक निफ्टी is moving pretty fine, wherein बैंक निफ्टी का ओपनिंग हो गया at 452. It opened low but then from there on it has bounced now back. Okay, तो फर्स्ट 15 मिनट्स तो मार्केट को कूल ऑफ करने के लिए आपको देना ही चाहिए, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स मे मेक यू डू मिस्टेक्स. ओके, सो द वे इट was opening, ऐसा लग रहा था कि there could be a pressure on it, but then it went down as the day low of 424, and just in the third candle it's moved up to the day high also. तो विक्स को एक बार देख लेते हैं क्या बता रहा है. विक्स बहुत ही स्लो है, तो यानी option seller will face little issues in this. If you are an option seller, you may face issue. So this is the first day of the new week. As far as Nifty is concerned, 847 opening हो गया है with the previous close of 893. So 871 का high लगा है. So if you go to the data which I explained yesterday also, exactly Bank Nifty has taken a support. तो मेरा चैनल जो भी देखता है वो रात का एनालिसिस वीडियो अगर देखे तो वहीं का ये अभी तक का सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है मार्केट. इफ यू कैन क्लियरली सी, एंड सेम इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ बैंक निफ्टी आल्सो. इफ यू सी ऑन द डाउन साइड, we draw this horizontal line like this, so it is that 41450 would act as a support area, and अपर साइड मार्केट को अगर जाना है तो उसका हम बना लेते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दैट्स प्रिसाइसली वेयर मार्केट हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम. तो 41,600 ही मैं बोलूँगा. 41,600 इज द एरिया वेयर इट इज़ शोइंग लिटिल ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, सो दिस इज़ द सेटअप. अब आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम इसको तो अभी लेट इट कूल इट सेल्फ मार्केट, एंड देन ऑन हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं. चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़िए. इट्स ए कम्युनिटी बेस्ड चैनल इन ए सेंस कि यहाँ पे ऑल ट्रेडिंग कम्युनिटीज कैन कम, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू सी इफ आई कैन
हम्म, तो मैंने इसका चेंज किया है एंड आई चेंज द हेड दिस थिंग चैनल टाइटल और बने रहिए चैनल के साथ। तो मार्केट इज ट्राइंग टू सेटल इटसेल्फ, मार्केट अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। सो वी नीड टू वेट एंड गिव सम टाइम टू द मार्केट। हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर और मार्केट को समय देना पड़ेगा टू डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो। ओके, सो दैट इज वेयर द क्वेश्चन ऑफ पेशेंस कम्स इन दिस फील्ड। देखिए बैंक निफ्टी से निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है इस समय आपको, यू कैन क्लियरली सी दैट हैपनिंग। और दिस इज़ ए 1 मिनट चार्ट। तो ऊपर जाके सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, तो जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इस समय दे हैव सच अ ग्रिप दैट दे नो द एरियाज वेयर द टाइड इज गोइंग टू टर्न। ओके, तो इसीलिए इनिशियली इफ यू आर न्यू, आई थिंक अलाउ द मार्केट टू सेटल इटसेल्फ। उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, अदरवाइज यू मे गेट ट्रैप्ड। तो 41,450 अगर तोड़ता है देन वी मे थिंक अपॉन द अदर थिंग्स। बने रहिए चैनल के साथ। देखते हैं अभी क्या होता है। अदानी तो आज अदानी पे नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या अदानी आज भी गिर रहा है या नहीं। धीरे धीरे ये न्यूज़ डाई डाउन इतनी जल्दी हो कि नहीं। अदानी ट्रांसमिशन 5% डाउन है। अ, अदानी एंटरप्राइज अभी तक 3% ही डाउन है। तो लेट विल कम टू नो व्हाट्स गोना हैपन। कोई ट्रेड सेटअप नहीं है अभी तक, दिस नो ट्रेड सेटअप। चैनल से जुड़ते रहिए और बने रहिए।
सो नो ट्रेड सेटअप कमिंग राइट नाउ। मेरी तरफ से तो कोई ट्रेड सेटअप अभी नहीं दिख रहा है। आई ओनली वेट वेट एंड वेट। In the first half an hour to 40 minutes nowadays, it is very difficult to get any kind of a trade instantly generally, क्योंकि नीचे की तरफ भी अगर जाती हुई मार्केट दिखती है तो कन्विक्शन नहीं आता कि वो कितना नीचे जाएगी, राइट? In all even though this among the two indices अगर हम देखेंगे तो the pressure is more in Nifty, so Nifty को will try to study what is exactly happening in Nifty. So you've got 38 companies down, led by Reliance, Infi, ICICI Bank. These are the ones which are dragging the market down. Sector performance में अगर हम जाएं तो we can see clearly IT is under pressure along with pharma. लेकिन PSUs are doing okay. So clearly Bank Nifty और Nifty में there is again a divergence. Okay, so PSU consumer goods are not that important, but auto PSUs, private banks, so banks are up along with even metal. तो हम सेक्टर वाइज एडवांस डिक्लाइन अगर ट्राई तो देखते हैं, दिस इज ए सिनेरियो वेयर पीएसयूज ऑल पीएसयूज आर ग्रीन। तो अगर पीएसयूज ग्रीन होंगे, आप देखिए बैंक इतनी जल्दी से आसानी से गिरेगा नहीं। चैनल के साथ बने रहना चाहते हो तो बेल आइकन दबा के चैनल को देखते रहो। कोशिश मेरी रहेगी जितना हो सके मैं आपको गाइड करूं। IT is under pressure here. Among the metal, we have Adani as usual down. Right now, setup is such that most of the places, if you see, except little of few stocks here and there, मार्केट में कुछ खास नहीं है। बट हाँ, बैंक्स जो हैं दे आर प्रीटी मच फाइन। उसके अलावा तो खास कहीं कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मार्केट। ये है आपका सिनेरियो राइट नाउ एंड इट्स बीन क्वाइट सम टाइम नाउ। हाफ एन आवर हो गया है, किसी किस्म का कोई क्यू नहीं निकल के आ रहा है। नो क्यू, नो instant setup where you can be very convincingly buying a trade and getting some money out of it. Okay, तो अगर अभी आप देखिए एडवांस डिक्लाइन में वेरी वेरी फ्लैटिश काइंड ऑफ a trend in the market. इनिशियली कहीं से भी कोई ऐसा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप किसी ट्रेड में घुसोगे तो वहां से आपका कुछ ठीक ठाक बनेगा। एटलीस्ट मुझे तो नहीं आ रहा। सो राइट नाउ नो ट्रेड सेटअप एज फार एज आई नो। There are so many hundred thousands of training academies mushroomed during these days, along with streaming channels। बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी किस किस पे ट्रस्ट करूं किस पे नहीं करूं।
कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, किसी किस्म का कोई क्लैरिटी, किसी किस्म का कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। बस एक चीज समझ में आई है सुबह से, एंड दैट वन सिंगल थिंग इज दैट निफ्टी इज मोर वीकर देन बैंक निफ्टी. दैट इज द ओनली थिंग that is reflecting right now. खुलते ही ट्रेड लेना और उसमें से पैसे बनाना, ये बहुत लोग बताते तो हैं, बट आई थिंक हाईली रिस्की है वो, बिकॉज यू आर नॉट इवन एबल टू let the market settle itself. Then God only knows how people are getting that conviction of going for a trade as and when market opens. तो पहले 5 मिनट को खेलने का काम है क्या? It's not possible. अभी तक तो कुछ नहीं है. अभी तक तो कोई ट्रेड नहीं है. चैनल के साथ बने रह सकते हो आप. So let's try and see what else is happening in the market. इंडेक्स कंट्रीब्यूटर में रिलायंस को थोड़ा प्रेशर दिख रहा है. 1% डाउन है आर आई एल. नो ट्रेड सेटअप. हाफ एन आवर इज डाउन. So do join anybody who. So that's the thing. India VIX is low. A low VIX means बहुत ही sideways market. So keep that in mind. आप बने रहिए चैनल के साथ. मार्केट खुलते ही बहुत पैसे बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है. Lot of patience is needed. So you can clearly see 17,800 is very critical for Nifty यहाँ पर as far as open interest is concerned. और अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो वी आर क्लियर दैट 41,500 इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 41,450, 41,300, ये सारे एरिया इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट बैंक निफ्टी कोशिश तो कर रहा है गिरे ना. दैट्स ओनली थिंग विच इज विजिबल राइट नाउ. अठारह मार्केट को खुले हुए ऑलमोस्ट आधे घंटे के ऊपर हो चुका है. स्टिल नो trade which is giving you a clear cut indication of moving in a direction. तो ट्रेंड इज लाइक बहुत ही फ्लैट मार्केट है. वेयर वी हैव बैंक निफ्टी जो 16 पॉइंट नीचे है और निफ्टी विच इज अराउंड 75 पॉइंट्स डाउन.
Now world markets are also little flat, you can see. Or crude oil or natural gas, they are a little minus. Around 84 is the price of crude right now. Okay, pretty dull market. कोई instant trade नहीं दिख रहा है. Nothing is visible right now. There are companies which are coming with their results. Quarterly result companies का आ रहा है. So that is what is only happening right now. Majority of period, but देखना होगा क्या होता है. It will be a dull market, and if you have not seen मेरा कल का वीडियो, तो प्लीज़ जाके देखो. उसके अंदर मेरा सब्जेक्ट कल के वीडियो का आप देखिए. मैं रोज़ एक एनालिसिस वीडियो करता हूँ. वहाँ पे मैं एक आइडिया इन हेंस अपना एक प्रेडिक्शन प्रोजेक्शन करता हूँ मार्केट को लेकर. दैट कैन बी हेल्प टू यू. और कल जो मैंने रात को वीडियो निकाला था, उसमें मैंने कहा था फ्राइडे मार्केट का ट्रेंड साफ नहीं दिख रहा है. तो आप देख लीजिए, ट्रेंड इज सो unclear. So that was a logical video wherein I had explained many things yesterday. And अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो देखो और रेगुलर व्यूअर बनो इस चैनल के. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी नॉलेज अराउंड 6-7 ईयर्स की है इस फील्ड ऑफ ट्रेडिंग में. तो इट्स नॉट जस्ट लाइक आई एम ए न्यू कमर और एनी यंग लैड हियर. आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन well above 40, and I have done lot of trading in this field of stock market, especially index trading. मैं 5 साल से करता आ रहा हूँ. So I know certain things which can be a turnaround story in terms of money making if done perfectly. So it's all if and but का scenario रहता है market में, because nobody in this entire planet is there who can convincingly tell that, oh, I know everything. Nobody knows everything. Okay, तो पॉइंट यहाँ पर कहने का ये है कि this is a field where you have to understand the data, but there is more than that. Not just a data is going to serve your purpose. Okay, तो मैं अभी भी बोलूँगा 41,300 का लेवल जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है एकदम नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो. राइट, बट दैट्स the second level of support. But पहला जो important है, that is somewhere around 41,450 area. Okay, so if that falls, then you can really look out for a trade setup. And if you're not watching this channel, you will be missing something. That's what I can say. Don't miss this channel. I'm trying my level best to showcase my abilities through this. आप जुड़े, आप अपनी राय दें, अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे शेयर करें, डिस्कस करें. सो दिस इज, you can call it a community based channel. I have written also trading community join here. I want more and more people to join, express things. So let's see क्या होता है. So बैंक निफ्टी is trying to show some upside. देखिए एक बड़ा विंडो, एक बड़ा कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, ये सी. तो बैंक निफ्टी में एक अपसाइड कैंडल बना है यहाँ पर. सो इट वी हैव टू सी कि वो कितना ऊपर जाता है. द डे हाई इज 619, तो इम्पॉर्टेंट है
41,600 अगर पार हुआ तो देन there could be a scenario of an upside move. Now move is getting triggered by State Bank of India. तो चैनल से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, मैं यही कह सकता हूँ आपको फिलहाल। अभी भी कोई ट्रेड इंस्टेंटली नहीं लेना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। एक बड़ी कैंडल आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस कैंडल शेप्स अप नाउ। अगर ये डे हाई को तोड़ देती है आज के, तो देन देयर कुड बी ए सिनेरियो। तो मैं अपनी चैनल को ज्वाइन करिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। ट्रेडिंग कम्युनिटी क्रिएट कीजिए इस चैनल पे। This channel is for common traders. So if you are one of those who wants to discuss things, create a forum sort of thing, then you're all welcome here. ट्रेडिंग इन आइसोलेशन नहीं चलती है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए, LNTFH एक है जिसका एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर आपको वन डे के चार्ट पे। एंड तो इसको आप नज़र रखिए। LNTFH मे बी it could do some sort of an upside. कह नहीं सकते ज़्यादा। रेजिस्टेंस भी है इसमें 100 रुपये तक, ब्रेकआउट भी है। तो 96 पे इसकी एक स्ट्राइक है, उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। ₹3 प्राइस है इसका। वॉल्यूम्स चाहिए इसमें, आज मार्केट डल है।
तो अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में। आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछिए। देखिए पैटर्न्स ढूंढ रहा हूँ मैं। एल एन टी एफ एच एक ट्रेड मैंने अभी देखा है, उसका पैटर्न तो सही दिख रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र रखिए। एस बी आई कहीं ना कहीं कोशिश करता हुआ among the bank nifty and nifty, it looks like bank nifty is showing at least some strength towards upside. ये देखिए, and this is a scenario. So anybody who loves trading can come here, join here, discuss things, ask things. We'll try to just see how I can be a help. तो एल एन टी एफ एच जो है, इसका लॉट साइज है 8,900 का। तो देखिए एल एन टी एफ एच जो ट्रेड है, इसके अंदर एक फॉर्मेशन जो बनी है इन चार्ट्स, इट गिव्स a certain you know trending upside move, because ये देखिए, just see the one day chart pattern of this. It's as if like a W pattern is getting broken on a one day chart level. Okay, तो इस ट्रेड को अगर आप चाहें, and if you got enough capital, it's got a very very big lot size, so इसको करना बड़े ध्यान से रहेगा. uh, if you have that ability of taking that risk, this can be tried upon for at least a target of 4 rupees to 450. A target at 1 rupees 50 paisa, so you need to keep a stop loss of 1 rupees on this. That is, the stop loss will be 2 rupees here and the target is going to be 4 rupees 50 paisa. If anybody is interested, तो ये एक ट्रेड के रूप में आप देख सकते हो. ओके, बिकॉज ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर रहा है अपना. So this is one of the trades which I feel. बाकी बने रहिए चैनल के साथ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रियली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप जंप मत करिए चीज़ों पर. यू नीड टू शो अ हेल लॉट ऑफ पेशेंस. ओके, पीसीआर का डेटा देखता हूँ अगर पॉसिबली, व्हाट इट्स गिविंग एज ए हिंट. देखिए यही पैटर्न आपने फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रेडर. वॉट एवर आई एम डूइंग इज मोर. कम ऑन, अरे अलाउ यार. सो बैंक निफ्टी एज यूजुअल इज 0.95 अगेंस्ट 0.78 ऑफ निफ्टी. तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको दिख के लग भी रहा होगा अभी कि कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली इट इज लुकिंग a little much better vis-a-vis Nifty, right? This is a very high-end lot size trade. That's your LNTFH. सो जुड़े रहिए चैनल के साथ. बेल आइकन दबा के देखते रहिए इसको.
निफ्टी बैंक, एज आई टोल्ड यू, देखिए इट्स अगेन ट्राइंग टू ब्रेक दैट एरिया। ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। क्या ये यहाँ से अपना लेवल तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, दिस विल डिसाइड द मूव नाउ। सो कीप क्लियर व्यू फॉर बैंक निफ्टी, मेरा यही कहना है। तो देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड आया है, जो आप देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा मार्केट खुलने के बाद। तो शुरुआती ट्रेड अगर नहीं लिया हो, अरे मैं आपका बता दूंगा ना यार, अभी मैं हूँ कहीं ऑफिस। हेलो, आपका बता दूंगा, टेंशन मत लो यार। अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे पास हिसाब पूरा तैयार है। ठीक है ना, चलो परेशान मत हो। ओके, तो बैंक निफ्टी 41,600 क्रॉस कर चुका है, एंड देयर इज अ बाइंग ऑन इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का हम लोग एक बार ऑप्शन चेन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है क्या नहीं, कहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप्स बन रहे हैं जो रियल मायने में अपॉर्चुनिटी ट्रेड दे सकते हैं। We'll have to see whether it's a real genuine thing or not. Okay, so coming back to बैंक निफ्टी, well, ठीक दिख रहा है यहाँ से बैंक निफ्टी। आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के देखना। और आपके मन में किसी तरह का कोई क्वेश्चनिंग है, कोई आपने कुछ कुछ लिया हुआ है कोई ट्रेड, और आप उसके बारे में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल जस्ट ट्राई टू सी इफ आई कैन हेल्प। ओके, this channel is for common man who is interested in
wishes to make money through intraday trading in index options. Okay, yeah, stock options. अप मूव तो आ रहा है, 650 पार हुआ। आप देखिए बैंक निफ्टी इस इज इम्पॉर्टेंट नाउ। ये देखिए, तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी ट्रेड इन बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है बैंक निफ्टी में ही कुछ करने की, मार्केट की तरफ से भी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है बैंक निफ्टी में जो लिया जा सकता है। लेट मी सी। पहला दिन है तो टाइम वैल्यू का इशू नहीं आएगा, तो इसलिए आपको पुट शॉर्ट करके शायद उतना रिटर्न ना भी मिले, तो आपको कॉल बाइंग की तरफ देखना पड़ेगा। कहाँ पे ओआई बिल्डअप है, कहाँ पर वॉल्यूम्स का बिल्डअप हो रहा है, वो सब चीज़ों का कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। कहाँ पे कल के मुकाबले उस प्राइस में चेंज आ रही है वो देखना पड़ेगा। डेल्टा का एस्पेक्ट को इग्नोर मत करो, दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस। ओके, 41,400 की कॉल आप लगा सकते हैं। वॉल्यूम्स का इम्पोर्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो 41,400 कॉल को आप ध्यान से देखते रहना। तो 612 है लेवल, लेकिन उसको मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज नाउ अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप टुवर्ड्स लोअर साइड। कॉल या कोई भी ट्रेड आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही लेना चाहिए। जस्ट डोंट जंप ऑन द ट्रेड, दैट्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू से विद यू, टेल टू यू रादर। देखो सडनली एक कैंडल और बन के उसको नीचे की तरफ लेके आए, तो एसबीआई ऊपर है लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसी आर नॉट होल्डिंग वेल। तो बहुत डल मार्केट है, वॉल्यूम्स ड्राइड अप है, यही समझ में आ रहा है मेरे को अभी तक। आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो प्लीज़ जुड़िए, इस चैनल को आगे ले जाने में मदद कीजिए।
make it a channel of traders community. Come discuss without any hesitation. You can discuss spot market. That is the main intention to open this channel here. देखिए ऊपर से रिजेक्शन आया है, सो इट्स स्टिल वेरी वेरी डल इन टर्म्स ऑफ द मूव्स. मार्केट का वॉल्यूम की कमी है मार्केट में, और शायद वही रीज़न हो सकता है मे बी. बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन बड़े बैंक्स जो हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं. दैट्स अ प्रॉब्लम. PSUs are doing fine. UCO, Central, all are back to where they were. बाकी प्राइवेट बैंक्स में देयर इज a participation lacking. Okay, so that's the analysis for Bank Nifty right now. Nifty though has problem in terms of non-participation of many sectors. IT is not performing, FMCG is down along with pharma, energy. तो Nifty has its own set of issues जहाँ पे HCL Tech is leading from the below in terms of pressure, but Adani is little silent today on this market. Okay, I can see this for our information. हमने Adani लगा के देखा था. So somehow Adani is little silent, but that's the scenario as far as RIL is concerned. उसको भी देख लेते हैं, वो भी प्रेशर में ही है, 1% से डाउन है, मिड रेंज में है निफ्टी, कुछ नहीं करता हुआ, but 53 पॉइंट्स डाउन है. बैंक निफ्टी स्टिल is trying to hold itself. चैनल को प्लीज़ प्लीज़ देखिए, सपोर्ट कीजिए. कल के एनालिसिस की वीडियो को भी देखिए, उसमें मैंने जो बताया है बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिख रहा है. फ़िलहाल ट्रेंड क्लियर नहीं है, यही मैंने आपको क्लियरली कहा था कल. मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि किस तरफ मार्केट इज़ ट्राइंग टू गो या मे विल गो.
तो जब आपको ऐसा मार्केट दिखे ना जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई ट्रेड बन नहीं रहा, तो आप समझ जाइए वो मार्केट इज गोइंग टू बी अ टायरिंग मार्केट। मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो मैंने लिखा भी था फ्राइडे मार्केट का ट्रेंड साफ नहीं है। ये आप नहीं देखा, आप जरूर इस वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगा। नथिंग इज हैपनिंग प्रैक्टिकली। बोरिंग मार्केट है। मैं तो चाहता हूँ लोग आए जुड़े यहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि मार्केट जब ऐसी होती है तो और ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। देखिए, पैसा कमाना ज़िंदगी में कहीं भी आसान नहीं है। चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे आप कंपनी में जॉब करो, चाहे आप अपना बिजनेस खोलो, हर वक्त हर जगह आपको एक चैलेंज के साथ जीना पड़ेगा। बदकिस्मती से अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो। कोई किसी किस्म का भी आपके पास कोई लॉजिकल क्वेश्चन है, आप यू कैन डेफिनेटली आस्क, बट मार्केट ट्रेंड इज सच, जो मैंने कल अपने एनालिसिस वीडियो और प्रिडिक्शन वीडियो में बताया था कि ट्रेंड क्लियर नहीं है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। यू कैन सी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर स्टॉपिंग एट वन पर्टिकुलर एरिया। बैंक निफ्टी ने कोशिश किया 41,600 के आसपास उसको, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया अपने आप को। तो अभी तक देखिए 1 घंटा होने को आया, दिस एब्सोल्युटली नो ट्रेड सेटअप। In fact, Nifty will get more weak in case if falls below 17,800 levels. So 17,750 area will be tested then. तो ये ध्यान रखना है आपको। As far as Bank Nifty is concerned, the thing is that here also the scenario is very clear कि 41,500 is the area which it's trying to hold, but 41,600, 41,700 पे there is an issue coming in it. Okay. Yeah, Anand, why don't you join on a regular basis? Because here you'll get an overview of the things. So 41,638, so 20-day exponential moving average जो होता है, that's very key. So 41,650 जो है, that will be the critical Bank Nifty area. अगर वो, if that somehow gets across, itself crosses that area rather, then only you'll have any possibility in Bank Nifty. Else it is tough for Bank Nifty. And as far as Nifty is concerned, 17,875 maybe is the area. If it moves somewhere above that, then there is an upside possibility of 50. No, I am an investor, so I have invested well in stocks. As far as trading is concerned, I'm good on analysis part of it. Okay, so that's it. I can't disclose much on that, but I can vouch you that my learnings and my methodology can help others to probably increase their uh, earning pattern, consistency, psychology. On those things only I work here. As far as if you ask me about this, so I have been trading, I have done back testing of things, and purely on that basis I have created this channel where I try to give the guidance. I don't do daily trading. Simply I occasionally do daily trading. I do definitely on Thursdays. Short selling really helps you if you have funds above 5 to 10 lakhs around. Then you should rather be on the shorter selling aspect in index. Otherwise, you should be vouching and aiming for future trades. तो आपको मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो, अगर आपके पास फंड है तो आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के शॉर्टिंग्स की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है तो आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हो तो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करिए। यू शुड नॉट ट्रेड plain buying of index options. Okay, so that's what is my point here.
because that's not going to serve you the purpose. It is not going to give you much of earning. So that's the thing. Ananda, what do you do and where are basically are you from और आप क्या करते हो क्या आप from, just can you elaborate a little bit about yourself? So as we see back to the market, so what is the important level जो होता है आनंद, for just your information, 20-day exponential, look, few have reduced their losses and if not much, they do look, whatever I'm trying to tell somebody, it depends upon what kind of an investment he is doing. So it's very difficult to analyze in terms of exact returns what they do get, but definitely if they were making losses, that has been reduced drastically. That's all I can say on this. Because there's nobody on planet Earth, who is going to give you 100% assurance on things. Let's be very clear on this. This is a very serious field of making money, and it fluctuates more because of the psychological reasons than the knowledge aspect. Okay, आप समझो बात को. There are certain hundred thousands methods in this. There's no method is right or wrong. Main thing here is all about risk to reward ratio, not the 100% accuracy in trades. Okay, the tendency to stop early in a trade which is in your direction and just staying longer in a trade which is not in your direction is a very basic thing which people forget, and then over trading. So ये सब चीजों को control में लाओगे तो then you need a one good day. You see, in a month you got what 3 to 4 opportunities where it is a plain upside trend. There you should pump in yourself. Daily analysis is needed for a person who is into full-time trading. Like I am into full-time field of this stock market, because every day it behaves in a very peculiar way. There's no consistency in the behavior of the market, so that's why I have to come here, I have to see the market. So I thought, instead of me seeing individually on a laptop, why shouldn't I come out with my channel and try to see how many people would bother to see this channel, join here, maybe ask things, share their experiences. It's on those lines I'm telling. Okay, what I can do best is to maybe give you few tips here and there, make you psychologically little more stronger, make you understand entire core of what I feel trading is all about, because I have traded myself very so much. Okay, 2% is brilliant. Anything, just if you double your returns compared to what your fixed deposit is giving, that's fantabulous, because the formula of 72, the thumb theory applies there. Even just imagine a 24% annual return. You are going to double your money in what time? Can you believe? You just going to double your money in 3 years. Okay, a 2% monthly return will double your money in 3 years, double your wealth in 3 years, if I may say. Okay, Anand, and if you're making it, hats off to you. That thumb rule of 72, always remember. Okay, so anything you want to calculate, it does it for you in span of few seconds. Okay, where you can find what's the uh, wealth is going to be on certain percentage rise on a consistent basis. Okay, so as if you come back to market is very dull here. There is lack of fear index, that's your VIX. When VIX is down, an option buyer stays with chance. अगर VIX ऊपर रहेगा, when this is going to be ऊपर, rather high, so option selling works there. Okay, so there's certain, there's small tips and tricks which needs to be applied, to control that eagerness of relentless trading. Hell lot of patience is needed in this. If this field is all about showing your patience and common sense, if I may say, right? Certain times trade just move in front of our eyes and we just get ourselves confused whether not to buy and buy.
So it's like that. Anything, Anand, you didn't tell about yourself. What exactly you do? You mean asking me things. What about you? I will be. It will be great if I come to know a little bit more about you. Okay, help growing this channel. Bring in people who are into the field of trading. Let them discuss here, all of you, so that you feel a place where real discussions can happen. Okay, among yourself. Maybe I could be in the picture. This platform is absolutely for traders. Maybe I can learn, maybe I can tell, give and take sort of. But people who really look, I'm in my 40s, so I've been around 6 years now in this. So I've been relentlessly trying to figure out which is the best method, and I'm still work in progress. Okay, okay, so you're into forex, is it? Okay, so I've never ventured into it, so absolutely no clue on that. All I see is there's hardly any movement in that, so I don't know how it. So I've never shown much of actually learn. Um, I myself never shown that keenness to learn on that field of forex. I guess it's forex trading is what you are trying to say, right, Anand? And where are you based, Anand? Since market is absolutely doing nothing, it's better to have a discussion. Since I belong to Pune, I'm from Pune, Maharashtra, India. What about you? एक बार वापस देख लेते हैं. We'll go once again. What about Nifty 20-day exponential? देखो, field of trading is all about understanding the data. Yeah, Bank Nifty do is riding on a wild animal. But the speed of wild animal is such that it can make you real good money in one shot. But you need to have that patience to wait for it. Okay. Index is the only available thing with people who have got lesser of finance. But if you have got good finance, there are things in futures also. Look, I in this channel generally face people who got very limited capital. If you got good capital, my friends were earning massive, as high as 80 lakhs to 1 crm per annum, because they do real good future tradings. And short seller stays safe in industry trading. Because in any trading, if managing 1.5-2% a month is good enough. Anything you do swing trades, you do cash, forex, whatever, commodity, beat, doesn't matter. The end result matters that try to avoid those losses, try to avoid that habitual habit of relentless trading. So even a risk to reward of 1 is to 1.25, sorry, 1 is to 1.5 will fetch you good results if you're only 50% accurate on your trades. Okay. So 17,800 coming back to the market right now. So as I told you, in market it's clear that 17,864. So that means I marked the level 876. So somewhere here. So we can tweak it a bit. 17,875. Yeah, 70. This is the area of importance for Nifty, and anything below 17,800 will be a trouble for the Nifty. If trading done on levels instead of con- you know a gut feel or something, then still there is a probability of earning. Okay,
Trading the emotions पे trading करने से I don't think it will fetch results. So please, friends, keep watching this channel. Help me grow this channel. That's going to happen once you people are there consistently coming along with your friends who are good or are in terms of regular full-time traders, like people who is full-time into anything will understand that the funda behind all these figures and try to come out with certain new analogy, if I may say a word. So VIX is flat, dull, market doesn't have volume. Adani holding itself, not falling further. So only plus so far. RIL bit negative. And sector performance is there in front of you. So this is a scenario right now. So this is right now the scenario. Pharma IT under pressure, but still PSUs are riding the tide along with private banks. Like you got even metals now plus. So once more we'll visit the advanced decline scenario. देखिए यूको बैंक JNK बैंक, so they are all doing pretty fine. The PSU PEL is really shaping up well. It's already 5% up. There's something Pyramid Enterprise is into. So you got Adani ports now in Nifty leading. So Adani is not going to bow down so easily. Okay. So whatever Hindenburg wanted to do, he has done it, and things have been done and dusted. Now it's more becoming like a political saga than anything else. Now that's a true. If trading had been the easiest job, then people would have stopped working. Yeah, this was always a field of probabilities, and no matter a place where you want, easy thing will never happen. Even if you work in a organization, how many of the person in that organization can go climb that top level? So it's like that. There can be explanations for that whatever report it is saying, which business is also like that only. Do any business, the probability of success is very low only. You have to create things to happen for you. I can only say that much. Like, had it been a place where nobody would have made money, so nobody would have been here also. Look at the mushrooming of channels along with people who have started making money. The one who make money, they are good. 74%, in fact, 25% is the success rate for people who trade in futures against that 15% success rate in options. Need to see the brighter side of it. Otherwise, अगर we are going to think कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पैसा नहीं बनता, तो then nobody should anybody who thinks that please don't come. That's all I will tell to the person. Nobody has forced anybody to do anything. Okay, there is this field. It's a high probability driven game here. If it suits you, you are in. If it doesn't suit you, you're out. As simple and straight. There's no midway in this. So it's a very peculiar question keeps asking. Just imagine SEBI is giving that data. So SEBI is very clear. Okay, I'm going to clearly show the picture. So in spite of that, if people are taking interest in it, then that's up to the people to decide what they want. Nobody else is going to come to the rescue.
This market is not a living thing. It's a non-living thing. It's a world of figures. Absolutely 70 minutes on my stream or अभी तक कोई trade setup नहीं है. So that kind of a caliber patience also has to be inbuilt, because by now many people would have tried many things and they would have ended up only losing by triggering their stop losses. That is what the problem with this field is, that patience is not there. People who need to be working have started coming in this. I feel this field strictly should be for people who have matured themselves by age. Youngsters will unfortunately end up burning more of their money. Uh, the restlessness aspect is going to kill their money. That's my analysis. कोई भी anything else, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, any questioning in the mind, definitely ask me. Get more and more people here is what my aim. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइए. तो I can join you only if I come to know that you are more experienced than me. What do you mean by that, yaar? Come on. What are you trying to say? It's no question of joining that way. Firstly, you yourself is not at all convinced on Bank Nifty. You call it a riding wild animal. Then and there the contradiction starts. देखो, we need not be very sharp smart guy here. Okay, मैं बोल रहा हूँ ये, the common sense is most uncommon among everybody. So I don't know how to answer your question on this. If you're doing great in what you're doing, then I would say you rather carry it on. What would you want me to do for you then? If you're smart in your field, then I say all the best, my brother. कुछ नहीं कर रहा है market. Okay, so that important level has come, 41,644. I was just about to say nothing is happening in the market, and suddenly you got that 20-day exponential moving average moving up now. Just focus on the trade, 41,400 call. I think market has given that move, so focus upon the trade now. That's your 41,400. You need to keep a sharp eye on that, and that's what I am going to head off. 41,400 call.
Okay, that would be uh, a short listing trade for me right now. I want बैंक निफ्टी, मैं चाहता हूँ बैंक निफ्टी 41,650 को क्रॉस करे। अगर वो क्रॉस करता है तो एक सेटअप बनता है अब। once this bank nifty crosses 20-day exponential moving average, the possibility of money making arises in 41,400 call trade. Okay, one good trade is enough. So that's what मेरा conviction है on bank nifty, because it is heading towards that important area. So I am very much in this trade, just for your information. 41,400 call. Okay. So right time, right entry is the only way out in this field of trading. Instead of just gunning down any kind of entries, wait for the levels to come. So just look how it's shaping itself up. 41,400 call trade, and accordingly adjust the stop losses. I am in the trade, just for your information. Okay, I'm very much in 41,400 call trade. Okay, keep an eye on the trade. Is just look at the moves. It's shaping up well so far. So right time, right trade, right money making. So we managed to pull out on this one. Uh, it's given you what you wanted. Okay, so just see the smoothness of the trade, friends. Because मैंने आपको बोला ही था, we can only do one thing, is that play the levels and make it happen, in a sense कि adjust your settings accordingly in the trade, and try to stay, and since I was telling you, wait for the level 20-day exponential. So it's all about figures. It's not about anything else. It's all about figures, in a sense. It's all about understanding the data and trying to build up certain fast moves in your own advantage. यही मैं कह सकता हूँ कि ट्रेड के बिल्डअप का एडवांटेज आपको उठाना आना चाहिए, और वो पता लगेगा once you see the consistently the move. And rest remains to be like, no carry positions, my friend Anand. FNO and carrying FNO are two divergent things. You have to do it, means you have to do it in the 6 hours, else you won't fetch great returns also. The risk builds up. So 41,400 my trade is the first trade which I took, and it's done well. It's given my safety net here. I'm very much there in it, and I've kept my stop losses at the cost area, so that even if it reverses, I'm not going to lose any single penny. Smartly do it. मैंने आपको बोला है 41,400 के ट्रेड के बारे में. Now let's see how it shapes up further. So PSUs are in action, I guess. It's given a smaller
क्योंकि ट्रेड जो होते हैं ना, they give you opportunity. That opportunity needs to be taken at a right time, and then go for quantity and see what's your return coming like in it. Okay, so after a very long time, Bank Nifty gave an opportunity, but it couldn't hold itself up there. तो ये अपने आप को ऊपर hold नहीं कर पाया. But since I told you, you need to keep your stop losses intact, so that you don't enter incurring losses. So SL management, if you are having great SL management, then you may end up surviving. $20-day exponential yeah, you may share, but then I say कि जब उसको लेना ही नहीं है तो, but still you want, definitely you should share. I am of a firm belief that if you carefully see the market, day trade will give you opportunities to earn. Carry forwarding with lot of safety will not fetch you the returns. That's what the major problem with it. So till we see here Bank Nifty staying above 640 area, we know that it is trying to move up towards that 20-day exponential, rather crossing it. So we know for a fact that there is something in terms of data which is supporting us for this trade. We entered it because I didn't had my SL triggered that time. I re-entered it because I have the conviction for this trade. So this is all you need to do in a trading. मेरे SL को ट्रिगर करने के बाद at cost मैं उसमें वापस एंट्री मारा. Okay, so I am again safe on my SL. With this entry also I am again safe. So that's my way of doing it. Small profitability with good quantity you have, you can do that also. Else cost us modification of stop losses to be done any given time because of the volatility. To kill the volatility, there is no other way out than probably what I am trying to do. The stop losses at your cost, so any reversal will still save you from major losses, because one good move with volume will do it for you. So the trick of the trade game यही है कि आप अपना पेशेंस कैसे दिखाते हो. I have been very patiently rather waiting like a, what do you call, you need to wait like a hunter. You have to have that conviction on the things, and then you need to wait like a hunter and just wait for the prey to come, and then that's it. Tack, that your prey here is what? The prey here is trade than anything else. Okay. I hope I've been trying to explain things in a much controlled way. बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही आराम से मैं आज, without getting over excited,
trying to calm myself and so that I may sound more mature maybe. So keep trying. The reason of trying this trade again was probably this thing that it went on to move above its 20-day exponential. So give me a second, friends. So as I said, the reason of taking this trade was कि ये 20-day exponential moving average that was around we just saw 41,640 areas. तो वहाँ से इसने जो अपने आप को एक upside move दिया था that would have been capitalized and you would have made good uh, returns through that maybe. Anand, I will just work upon it. Let me also understand it because right now uh,
सो 41,638 मीन्स 41,640 के आसपास इसका 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, जिसको अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ा और सस्टेन किया तो देन मार्केट एक मूव देती है अपसाइड का। So stay tuned in the channel. Give me some time. So Bank Nifty is trying to hold itself. So Bank Nifty में you can be on the bull side trade, or that's what I am seeing right now as far as market is concerned. अगर आप ध्यान से देखिएगा तो PSU banks, private banks or entire Bank Nifty is doing pretty fine. The market is showing an upside move. Only thing is it has to sustain itself. वो वहाँ पे थोड़ा सा sustain होने में इसको time लग रहा है. 1 second friends.
फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट ब्रेक। तो एज वी सी, मार्केट जहाँ तक है वहीं एरियाज में रिवॉल्व करती हुई 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस जरूर किया है, बट थिंग इज टिल यू गेट सपोर्ट फ्रॉम, वेल नाउ द सपोर्ट इज देयर। आई वाज अबाउट टू से कि अगर हमको बड़े बैंक्स का सपोर्ट मिलेगा, तो एच डी एफ सी शेपिंग वेल विद एस बी आई, बट इट नीड्स टू होल्ड। ये होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक ये होल्ड नहीं होगा तब तक will not get a great opportunity. Only few small opportunities to scalp it is what has been happening since morning. Though this trade of yours worked reasonably well, because it went from what do you call, it went till as high as 490 odd area. So till बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता ऊपर, तो इट्स अ टफ ट्रेडिंग डे आई वुड से, बिकॉज वॉल्यूम की कमी, there is no movement in the market, but still we managed on the basis of 20-day exponential moving average breakout. Okay, so that's the thing. So this is how you have to shape up a trade. Don't jump right from the morning. If you are buying an option, it is never going to be very easy cakewalk for you, because moves will be very sharp. Up and down moves will be very very sharp, so you have to be very careful. तो वो सब जब आपको करना है, तो आपको चार्ट को कन्वर्ट कर देना ऑन ए 1 मिनट चार्ट बेसिस. यू कैन रियली मेक आउट कि what is happening with the trade during that time, right? So I believe somewhere here we tried to identify the trade. Somewhere यहाँ पर हमको वो ट्रेड का सेटअप मिला था, and it gave you an opportunity of 30 to 40 points if not more. But क्या हो रहा है कि volumes are not justifying with the trade, if I may say. Okay, so that is what is the challenge right now. And बैंक निफ्टी का यही है कि you need to be not thinking of selling in bank nifty right now, because PSU bands are strong, and that is probably could be the one of the reasons we should not think of any kind of a selling opportunities in bank nifty. So keep that in your mind. And Anand, I have to check it up. So Anand, what you are trying to show through this hedging strategy, you are not at all bullish on the market. That's what I understood from what you are trying to do and hedge and all those things. Am I right? Correct me if I'm right. In case you could correct me if I'm wrong also. Okay, Anand, and try to bring people who are like-minded people like you, who are really trade enthused, who are into 100% trading activities, so that we get to share each other a lot of things, right? I'm not a guy who carry any kind of FNO, call it future or option. I never believe in the concept of carrying it. Okay, so now coming back to the market. तो मार्केट में अगर हम निफ्टी की तरफ देखेंगे, तो निफ्टी का भी मैंने आपको एक 50 डे, सॉरी, निफ्टी का भी मैंने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बताया था. विल जस्ट सी वेदर इट्स ओके. तो 17,875 द एरिया मार्क्ड. ओके,
तो अगर ये उस एरिया को क्रॉस करता है निफ्टी समवेयर हियर, देन वी कैन क्रिएट द सेम। आपको क्या चाहिए सुधांशु, आप बोलिए। सुधांशु, मैं यहाँ कोशिश करता हूँ सही समय पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी, और कभी कभी स्टॉक ऑप्शंस, इनके बारे में भी बताता हूँ। और जब जैसे जैसा आपका बजट है वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या शॉर्ट सेलिंग सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आप बनेंगे, रेगुलर रहेंगे, तो श्योरली आप अपने बारे में बता सकते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो। क्या आप सिर्फ ऑप्शंस करते हो, कुछ और करते हो? जैसे आनंद जो है, उनका एक्सपोजर जो है वो फॉरेक्स में है, और मैं फॉरेक्स वगैरह तो देखता नहीं हूँ। ओके, तो जैसे मैं लेवल्स के ऊपर वर्किंग करता हूँ, जैसे मुझे तो जैसे जैसे आप चैनल में रेगुलर जुड़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा, और हमें ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल्ड वे से करना, और राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप पूछिए, आपको क्या पूछना है सुधांशु। तो मेरी एक अपनी तरफ से कोशिश रहेगी, मैं जो मुझसे बन पड़ा उसके बारे में उसका जवाब देना। ओके, स्विंग करते हो, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ। तो स्विंग मतलब आप कैश करते हो, राइट? तो मैं बेसिकली एम्फसाइज ज़्यादा करता हूँ कि मैं कैरी फॉरवर्ड में मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता। मैं एक बात मानता हूँ कि डे ट्रेडिंग अगर आपने किस तरह शार्पन कर ली, तो उससे जो आपकी कैपिटल बनेगी उसको आप लॉन्ग टर्म स्विंग की जगह लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालिए, है ना। मैंने तो यही किया। मैंने अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाया था, और इसमें मैंने एक दो कोशिशें की थी। पोर्टफोलियो को भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स अगर पोर्टफोलियो में होंगे तो भी शायद वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बताइए सुधांशु, आप क्या करते हैं, और आप कब से फील्ड ऑफ ट्रेडिंग में हैं? थोड़ा और अपने बारे में बताइए। मेरा तो मकसद ही है ऐसे सब लोग को यहाँ लाना, इकट्ठा करना, बिकॉज इतने सारे चैनल्स हो गए। उस चैनल की भीड़ में मेरा चैनल है जहाँ मैं जेन्युइन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हूँ अभी तक। बाकी चैनल्स आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हज़ारों हज़ारों सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जो जी बिजनेस जैसे चैनल की व्यूइंग हो रही है 20,000, और यहाँ कुछ महारथी हैं जो अपने आप को समझते हैं, उनके यहाँ व्यूइंग हो रही है 15,000। तो आप सोच सकते हैं कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, राइट। ये मैंने एक इसको ट्रेडिंग कम्युनिटी के रूप में ही समझ के इसको क्रिएट किया है चैनल को। बट जिनको और ज़्यादा थोड़े बहुत टिप्स ट्रिक्स, या जिसको बोलते हैं ना एक स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, तो वो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से जुड़ें, और फिर मैं वहाँ डिस्कस करूँगा कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। बाकी मेरा डेली एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करता हूँ अपनी तरफ से 100%। बिकॉज मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केटियर हूँ। मेरा कोई दूसरा ये नहीं है रोल प्ले या काम सॉर्ट ऑफ। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को सिंसियरली डाला हुआ है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो इसके थ्रू मैं जो पॉसिबली जस्टिफाइबल चीज़ें देखता हूँ, बताता हूँ, या बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं खुद अपने आप को मानता हूँ कि मैं तो भाई रोज़ ही सीख रहा हूँ मार्केट से, और यही थॉट प्रोसेस चाहिए कि वी कांट बी चैम्प ऑन एनीथिंग। ओके, अब जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था कि फ्राइडे मार्केट का ट्रेंड साफ नहीं दिख रहा, वो इसीलिए बनाया था। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। आपका कोचिंग अपना अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। कहाँ से हो आप सुधांशु जी? बहुत बढ़िया, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपका कोचिंग है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे आप क्या सिखाते हैं? ट्रेडिंग ही सिखाते हैं या कुछ और? थोड़ा और बताइए, खुल के बात कीजिए, अच्छा लगेगा।
And Anand, you could also tell something about you if you are still watching the stream. So we should know each other as much as possible so that क्या होता है जब एक दूसरे से डिस्कशन बढ़ती है तो फिर एक फील आता है कि वाओ कि देयर इज अ कम्युनिटी वेयर यू नो वी कैन शेयर ईच अदर्स एक्सपीरियंस मे बी। बोलिए सुधांशु और बताइए अपने बारे में। ऑप्शन में नहीं, अच्छा मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप स्विंग ट्रेड में ज़्यादा बिलीव करते हो, ऑप्शंस पे नहीं करते। ऑप्शंस देखिए अगर स्मार्टली की जाए ना ऑप्शन बहुत बढ़िया चीज़ है। प्रॉब्लम वही है कि इसके अंदर थोड़े से ना टेक्नो एस्पेक्ट्स हैं जो हमको बड़ी बारीकी से समझने पड़ेंगे कि मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है कि खाली सेलिंग से पैसा आएगा, खाली बाइंग से आएगा या हेजिंग से आएगा। तो वॉलेटिलिटी को प्ले आउट करना पड़ता है मेनली। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इंडिया विक्स आपको सिंपल सिंपल बता देता हूँ, इवन आनंद इफ यू वांट यू कैन listen to this. If India VIX is going up, what is India VIX? Volatility index. Now, what is volatility index? You search, you will find it's nothing but a fear index. So, the more fear in the market, the more panic market is going to behave. The rise on India VIX is directly proportional to fall of market indirectly. Okay, so it's an inverse relation. Okay, दोनों के बीच में ये कम रहेगा ना तो ऑप्शन बायर के लिए ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो मार्केट गिर रही होगी, हमेशा नोट करना। ओके, दूसरा चीज़ है PCR of late has been a good tool. A PCR is nothing but a put call ratio. So any day when PCR is above zero point 0.9 yeah 1 plus, so that makes you good towards going the bull mode if I may say। तो आपको बुलिश एस्पेक्ट से सोचना है मार्केट को, एंड द मोमेंट इट इज बिलो लाइक इन केस ऑफ बैंक निफ्टी you can correlate it what I say, right? So now when you come to nifty I guess okay that was of nifty, so bank nifty is rather one। okay तो जो मैंने बोला ओके बैंकिंग रेलवे बहुत बढ़िया यार, आप तो बहुत सुधांशु भाई आप तो कमाल कर रहे हैं, ब्रिलियंट। आपने भी कुछ बढ़िया वाला कुछ किया है शायद, एंट्रेंस वगैरह क्लियर किए होंगे तभी आप इस कैपेसिटी में होंगे ट्रेनिंग टीचिंग का। बहुत बढ़िया सुधांशु जी, बहुत अच्छा लगा। पूर्णिया बिहार, बहुत बढ़िया। बैंकिंग एसएससी रेलवे, वेरी नाइस। सो आई वाज टेलिंग कि एनी पुट कॉल रेशियो अबव वन, दीज थिंग्स हैव टू बी सीन। इनको कोरिलेशन में लेके देन यू हैव टू सी अबाउट द लेवल्स। तो लेवल्स में बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू इंश्योर योर सपोर्ट रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड ऑन द चार्ट। हाँ ऑप्शन में लूज़ का एक्चुअली वो लूज़ करने की वजह यही है कि हमारी एंट्रीज कहाँ पर हुई हैं और हम उनको कैसे कोरिलेट कर रहे हैं अपने ट्रेड को। लाइक अभी सुबह से कोई एंट्री नहीं थी तो मैंने सिंपल फंडा देखा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 20 का है उसको आप लगा के एक लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक स्क्रीनर है जहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ ऐसे मैं कुछ जगह चार्ट के थ्रू अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे मेरा इंपॉर्टेंट लेवल मिल रहा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके ऊपर यानी कि 41,641 हो गया दिस वाज, और अब इसके ऊपर बैंक निफ्टी है तो आपको लगभग नियर एट द मनी के ट्रेड्स में जाके उसको स्टडी करना है कि ट्रेड का मूव्स कैसा आ रहा है विद अलॉन्ग विद वॉल्यूम्स। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जैसे आप एक टीचर हैं, मैं खुद एक छोटा मोटा टीचर हूँ जहाँ ऑफ एंड ऑन बच्चे आके या कोई भी बच्चे बूढ़े जो भी हैं जिनको इंटरेस्ट है उनको मैं एक सर्टन मेथडोलॉजी देता हूँ एट ए वेरी वेरी थ्रो अवे प्राइजेस। तो इसलिए व्हाट्सएप नंबर तो मैंने रिफ्लेक्ट किया ही है, और बाकी यहाँ पर मैं जस्ट जो कोशिश रहती है वो बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी राइट नाउ इवन दिस वेरी मोमेंट, सो यू शुड opt for 41,400 call and then just see how it shapes up because आपके साथ राइट नाउ जो लेवल है बैंक निफ्टी का वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन। सो ट्रेड को इस लेवल तक ढूंढना और फिर उसमें एंट्री करना ज़्यादा समझदारी है, ना कि जस्ट गोइंग स्ट्रेट अवे इनटू द ट्रेड। और नंबर ऑफ ट्रेड जो है ना वो आपको बहुत सिंपल है। इवन इफ आनंद यू आर लिसनिंग, फंडा बहुत क्लियर है। अगर मेरे 2 स्टॉप लॉस कट गए, कॉस्ट पे कट गए, तब तक तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर नीचे की तरफ कट गए, लैपटॉप बंद करो या मोबाइल बंद करो। टारगेट अगर पहले ट्रेड में आ गया, कुछ करना नहीं है। वो कंट्रोल मैकेनिज्म अगर नहीं आया, लालच का बना रहा,
तो आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर लो, आपको प्रॉब्लम होगा। स्विंग ट्रेड्स का यही है कि आप कैश के अंदर अपने लिए हों, अगर वो आपकी तरफ डायरेक्शन कर गए हों, बट उसमें यू नीड लॉट ऑफ फंड, यू नीड लॉट ऑफ फंड। मैं कभी ऑप्शन को कैरी करने में बिलीव नहीं करता, फ्यूचर को कैरी करने में बिलीव नहीं करता। ओके, स्टॉक ऑप्शन को नहीं करता, इंडेक्स ऑप्शन को नहीं करता। ऑप्शन चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, इंडेक्स ऑप्शन हो, पूरा एफ एन हो, उसको सेम दिन करना, सेम डे करना। यू हैव टू डू इट ऑन द सेम डे, वट एवर इट्स there to be booked as a loss, you have to respect it, because only realities in stock market is that stop loss. Okay, the moment you are carrying anything, stop loss को concept ही खत्म हो जाता है, right? Correct, because that's, you cannot carry a stop loss. You have to, you can do a stop loss when market is on, you cannot carry a stop loss. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सो इस समय मार्केट में ऐसे कोई ट्रेड्स नहीं दिखते लॉन्ग टर्म, 10 years 20 years के पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू क्रिएट योर स्मॉल पोर्टफोलियो एज सच। और उसमें आप क्या कर सकते हो, मंथली एसआईपी कर सकते हो, एज सिंपल एंड लेमन टर्म्स, बेसिक लॉजिक, यू क्रिएट ए स्मॉल इट एंड दैट विल बी sort of a wealth for you. Okay, so it's like that. Okay, सो वेल्थ क्रिएशन का वो फंडा है। अदरवाइज आपको अच्छा ट्रेडर ही बनना पड़ेगा, डे ट्रेडर। देन ओनली यू विल एबल टू पंप इन दैट मनी इन योर स्मॉल एस आई पी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सेटअप। ओके, आई होप आई बीन एबल टू क्लैरिफाई व्हाट आई वांटेड टू ऑन दिस थिंग। और इसलिए और जो ऑप्शन में लॉस होता है, ये होता है वो हम लोग इम्पल्स पे ले लेते हैं बिना ज़्यादा देखे। और लॉट साइज का रहता है सेटअप, इसमें टाइम वैल्यू रहती है, इंट्रेंसिक वैल्यू रहती है। आज पहला दिन है, तो आज आपको टाइम वैल्यू का कुछ लेना ही नहीं। जो एस्पेक्ट ऑफ थीटा और डेल्टा, दो ही एस्पेक्ट तो चलते हैं यहाँ पर। डेल्टा बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ें, सब सिंपल है, समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक लॉजिक लगाऊं, तो 17,700 और 17,866 में काफ़ी अच्छा खासा फर्क दिख रहा है, और 17,700 का डेल्टा मैं देखता हूँ 0.63 है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा मार्केट जो है बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी ये 209 रुपये चल रहा है इसका प्राइस। ओके, तो इसके मूव ऊपर आने के चांसेस उतने ही हैं जितना ये अपने आप को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लेके जाएगा। और वहाँ से अगर मान लीजिए 50 पॉइंट आ गए, तो मेरे को 25 पॉइंट का मूव ये दे सकता है। यानी ये 206 जो दिख रहा है अभी 17,700, वो हो सकता है यहाँ से 225-30 दे दे। तो इस तरह के कंफर्म मूव्स को पहले स्टडी करके आना है, और देन यू हैव टू एंटर इनटू इट initially with less number of lots. You have to try, sharpen yourself for some time, and then you have to go in full on once 1 year cycle is completed and you are ending up positive. The base requirement in this field of trading ना, especially day trading की बात कर रहा हूँ, you started on 1st January 2023. It cannot be the case when on 1st January 2024 you are there, you are having a loss of even 1 rupee. अब ये आप समझो what I told. If you have started with any amount and you are ending even a 1 rupee negative, that means entire year you just didn't do anything. You just wasted your year. As simple and straight. एक साल की साइकिल तय करेगी how good trader you are. Okay, it's not going to be 1 month, few weeks, few days. It has to be one complete year. One complete year without a single loss in totality will make you a good trader. That's what I feel. I've seen people, I've experienced it. Okay, so we just nearing our 2 hours of stream now. So generally I don't stretch very long, but since people good people like you have joined, I'm really happy to see new people subscribing and joining me. Help me to grow this channel. मैं तो सुधांशी जी आपसे बोलेंगे, आपके इतने बढ़िया 750 बच्चे हैं, अगर आप मेरा एक ही काम कर दो, 750 बच्चों को मेरे चैनल का लिंक ही दे दो कि वो अगर सीखना चाहते हैं थ्रू लाइव स्ट्रीम फ्री में, तो मेरे चैनल को आप आगे बढ़ने में मदद कीजिए. दिस विल बी द ग्रेट हेल्प. एंड इवन आनंद, यू कैन डू इट by maybe sharing my channel links to people. If that's possible, please do it. That will be the
फर्स्ट ग्रेट हेल्प, एक अच्छी मदद अगर मैं कह सकूँ आप लोगों से, राइट। तो कमिंग बैक टू द मार्केट, तो वही है, सिनेरियो सेम, नथिंग मच हैज चेंज नाउ। अपर लेवल्स पे मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके रखा है, एंड it's moving in those areas. But all in all, if you see in terms of the sector performance, you got PSU top on there doing real well along with auto. Then you've got private banks also and metals. The pressure is into IT, pharma. Okay, so these are the basic things need to be followed day in day out if you want to be a day trader. And I insist people should be day trader and try to break the code, because for carry forwarding trade you need a hell lot of money. रिटर्न नहीं तो आएगा नहीं, यू नो। यू गॉट गुड कैपिटल, आप करिए 2% अ मंथ इज आई विल से मैसिव। 3 साल में आपकी वेल्थ डबल हो जाएगी अगर आप 2% महीने का निकालते हो। तो ये अभी सिनेरियो चल रहा है राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द मार्केट। आई विल जस्ट wind it up. Almost all of our matters did very well in pharma, otherwise pharma pressure में ही है। And as far as Nifty is concerned, Adani Port is shaped up well. Okay, so Adani के शेयर्स पे अगर आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा आज उतना प्रेशर फिलहाल नहीं दिख रहा है, दैट्स गुड। So I think I will wind up the session. Just keep things simpler, and I'm very sure things will help happen for you. तो अगर possible हुआ, I will join back on the second half of the stream. Till then, please take good care of yourself. Keep supporting this channel. My humble request. सुधांशु जी, आपको तो स्पेशली अगर आपके 750 बच्चे हैं, अगर एक एक बच्चा भी सब्सक्रिप्शन कर ले मेरे चैनल का, तो बहुत 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 बढ़िया हो जाएगा। ओके, so that's it. Bye bye for time being. Thanks and many thanks for watching this channel. Bye bye.